guys, welcome back to my channel. I hope you are doing great, and I am back with another video for you guys, in which I'm gonna discuss about one of the term which is not specifically prescribed under Companies Act 2013, but yes, these type of term exist, and that is the vanishing companies. Now we have read a lot about defunct companies, dormant companies under Companies Act 2013, but there is not a prescribed definition about vanishing companies under Companies Act 2013. So I thought, why not I make a video for you guys in which I can explain that what the vanishing companies are exactly about and what does these vanishing companies mean. So let's get started. I hope you will like this video and you will find this video useful, and if you find this video useful, then please like, share and subscribe to my channel. So let's get started. Vanishing companies are the companies which take funds from the public through initial public offer, and afterwards they do not comply with the filing requirements of the Registrar of Companies and Stock Exchange for a period of 2 years or more. So basically, for a vanishing company, it needs to satisfy following 3 conditions, and if the company satisfies following 3 prescribed conditions, then it is considered as a vanishing company. So first condition is that if the company fails to comply with the filing requirements of the ROC, that is Registrar of Companies, and the Stock Exchange if it is a listed company, for a period of 2 years or more. Second condition is that the company is not maintaining its registered office at the address which is specified to the ROC. And third one is none of its directors are traceable. If all the 3 conditions are satisfied by the company, then it is considered as the vanishing company. तो अगर कोई भी कंपनी एक डिटेल में देखें तो कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से फंड्स उठा लेती है और उसके बाद वो नॉन ट्रेसेबल हो जाते हैं, उसके डायरेक्टर्स नॉन ट्रेसेबल हो जाते हैं, वो रजिस्टर्ड ऑफिस उस जगह पे मेंटेन नहीं कर रही जहाँ पर एक्चुअल में आरओसी के पास जो एड्रेस प्रिस्क्राइब्ड है, और दूसरा और वो कोई भी रिक्वायरमेंट्स दैट इज फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं कर रही है, तो वो कंपनीज वैनिशिंग कंपनीज कहलाई जाती है. Talk about the norms and laws which are applicable to vanishing companies is governed by the Coordination and Monitoring Committee, which is a joint system of the Securities Market Regulator, SEBI, RBI and FCA. Okay, so under Companies Act there is not a prescribed definition of vanishing company, but yes, section 447 of Companies Act 2013 and section 450 of Companies Act 2013 prescribe for various punishments. So section 447 deals with punishment for fraud, and section 450 deals with the punishment for the various crimes which are not specifically specified in the act. So under these section, the vanishing companies can be punished. After that, the directors which are not traced, which are not traceable, are debarred from entering the capital market in future. मेन क्वेश्चन अराइजेस कि क्या वैनिशिंग कंपनीज फ्यूचर में वैनिशिंग कंपनी के टैग से हट सकती है. सो द आंसर वुड बी येस. अगर एक कंपनी जिसको आज हमने वैनिशिंग कंपनी डिक्लेयर कर दिया, वो फ्यूचर में अपनी एक्टिविटीज रेगुलर कर रही है और फाइलिंग्स प्रॉपरली कर रही है, सो येस, सच कंपनी विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल कंपनी, और उसको एक वॉच लिस्ट में डाल दिया जाएगा, बेसिकली ये देखने के लिए कि ताकि कंपनी इन कंपनीज के ऊपर इन फ्यूचर वॉच रखा जाए कि क्या वो ठीक से अब काम कर रही है और दोबारा से क्या वो वैनिशिंग कंपनी के में कन्वर्ट होने के पाथ पर तो नहीं है. ओके, सो या दिस वाज ऑल अबाउट द वैनिशिंग कंपनीज. आई होप मैंने बहुत प्रिसाइज फॉर्म में आपको हेल्प करा हो वैनिशिंग कंपनीज क्या होती हैं एक्चुअल में ये बताने का. सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. विल मीट यू गाइज सून इन माई नेक्स्ट वीडियो.